बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और आप लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं जी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कि इंग्लिश के जो गेस हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, वो वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो इंशाल्लाह ताला इनमें से आपको पेपर में ज़रूर आएंगे। ये बड़ी रिसर्च करके पास पेपर देख के और मेहनत करके बनाए गए हैं आपके लिए। तो आइए जी इनको शुरू करते हैं। क्लास 10 की इंग्लिश है हमारे पास, पेपरों में थोड़े दिन ही रह गए हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना, लिख के याद करना है ताकि स्पेलिंग की कोई आपकी मिस्टेक ना हो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों से ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। अगर आप लाइक जब करते हैं तो फिर ये वीडियो ज़्यादातर आगे फैलती है, ज़्यादा बच्चों के पास जाती है, तो सभी का फ़ायदा हो जाता है। फिर आइए जी, ये 2023 के मुताबिक आगे ऑनवर्ड जितने भी बोर्ड की जो नई पॉलिसी है वो यही चलनी है, तो उसके मुताबिक ये बनाए गए हैं। अब तो इसको देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस। हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। ये पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन है बुक का और बड़ा ही आसान और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन द मॉरल स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ by seeking light from the message and guidance from the holy prophet। इसको मैं बस एक दफ़ा रीड आउट करता जा रहा हूँ क्योंकि अगर ट्रांसलेशन करने बैठूंगा तो ये बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो को लंबी हो जाएगी। हाउ डिड द रसूल रिजॉल्व द इशू। सूरबाग ने इशू कैसे रिजॉल्व किया, हल किया। ही एडवाइज द मोस्ट इक्विटेबल plan for setting up the black stone which was accepted to all tribes। Thus he resolved the issue and pleased everyone। तो ये हमारे पास दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ वर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ रसूल्स जस्टिस इवन बिफोर हिज नबूवत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम resolved the issue of setting the black stone justly and saved people from a tribal conflict। How did the Holy Prophet set high and noble ideals for all mankind? He set up noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है what made non-Muslims bring their suits to the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam। The justice of the Holy Prophet made non-Muslims bring their suits to him and he decided cases of the Jews in accordance with the Jewish law। How does the Quran describe the personality of the Rasul? The Holy Quran describes the personality of the Holy Prophet as thus: we have indeed in Messenger of God a good example of conduct for anyone whose hope is of God and the final day। When does Chinese New Year start? Chinese New Year कब start होगा? The Chinese New Year starts somewhere between January 21st and February 20th। Why did non-Muslim trust the Holy Prophet? गैर मुस्लिम हजूर पाक पर क्यों इतबार करते थे? The non-Muslim trusted the Holy Prophet because he was well known for his justice and decided cases in equity। What is Chinese belief about cleaning house before New Year Day? Doing this said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for coming year। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए होगी तो इंशाल्लाह ताला ये जो कम्युनिटी पोस्ट होगी चैनल की वहाँ पर मैं अपना नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, उसके लिए थोड़े से चार्जेस आपको पास देने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी व्हाई डू द लिटिल रेड इनवेलप फिल्ड विद मनी सिंबलाइज। द लिटिल रेड इनवेलप फिल्ड with money symbolize wealth and prosperity for the coming year। Number 11, what can we learn from failure? We come to know about our weakness and shortcomings। From our failure, after overcoming these hurdles we can get success। नेक्स्ट 12 वाला क्वेश्चन है हाउ इज एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द
वाउंड आना है, वर्ड नहीं है ये, वाउंड वर्ड है। और यहाँ पर हेल्पिंग नहीं है, हीलिंग वर्ड है, हीलिंग। हीलिंग मतलब कि जख्म को भरने के लिए एंटीबायोटिक क्रीम जो है वो क्या काम करती है। An antibiotic cream or ointment is good in healing the wound because it help keep the surface moist and help body's natural healing process fast. But why it is necessary to keep away soap from wound? The soap can irritate the wound, so it should be kept away from, from the actual wound. Why it is important to consider the scope of any field? We not only earn money from our career but also mental peace and satisfaction. So it is important to consider the scope of any field before choosing a career. When do you need to see a doctor? We need to see a doctor if the wound is not healing or we notice any redness, increasing pain, drainage, warmth, or swelling. What will happen after the rain stop? After the rain stops, a wonderful light will fill each dark place. How does television make us lazy? On television, we can view news with a little or no effort. In this way, television make us lazy. How is a newspaper more convenient medium of news? We can study newspaper at any time and at any place, so it is more convenient medium of news. What is one good thing about newspaper? The one good thing about newspaper is that you can read them at any time and any place. How do newspaper give us more in-depth coverage? Newspaper give detailed news, they give expert views and analysis. They also print different views of common people. Why do some people read more than one newspaper? They read more than one newspaper to get different viewpoint about news and check for its validity. Which medium do you prefer for news and why? Each medium has strength that the other does not. I like to read newspaper. I also like to watch television. Question number 24. How do career counselors help you choose the right profession? Career counselor observe and analyze our interest and suggest suitable career according to our aptitude. What were some famous career for the young people in the past? Becoming a doctor, a pilot or engineer our famous career for the people in the past. ये एक एक क्वेश्चन जो है ना इसका बहुत अहम है, ये सारे ही करने हैं, इसमें से छोड़ना कोई नहीं है आपने। In past, why did people want to become a doctor or engineer or a pilot? In the past, people want to become doctor or engineer or a pilot because these fields were considered highly rewarding in terms of both respect and money. What is meant by right profession? Right profession means a rewarding profession that provides respect, money, and mental satisfaction. Why are developing countries uh, going to suffer more due to overpopulation? The population of developing countries is increasing rapidly. Overpopulation cause serious economic problems. This is also worse shortage. There is also worse shortage of food. Therefore, developing countries are going to suffer more due to overpopulation. How does a book connect the reader and the writer? A book acts as bridge between the reader and the writer. A reader feels the emotion, feeling, and thoughts of a writer through the book written by him. Question number 30. What is limitation of improved technology? The improved technology cannot produce an unlimited flow of natural resources that are the raw material for sustained agriculture production. In what way books are better than radio, TV, and internet? We can study books of our own choice
at any time and any place, but radio, TV, internet, and internet do not provide us this luxury of enjoying them at our own ease. Who looked after Pip after the death of his parents? Pip's sister looked after him after the death of his parents. Who did what happened to the prisoner? The prisoner was recaptured by the soldier and taken away. How can career counselor help the young people? Career counsel can help the young people to select suitable career after determining their personalities and observing and analyze their interest. इसको आप ऐसा कर लें काम वाला कर लेते हैं determining their personality, observing and analyzing their interest. What is the effect of depletion of fossil energy? As an effect of depletion of fossil energy, costs of fuel increase everywhere. Which career do you want to adopt for? Give reason. The profession of CA and MBA IT have interested me most because these are highly respected and paid profession. I have special aptitude for these disciplines. वो कह रहा जी आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं आप नेक्स्ट? वो कहता है मैं CA MBA करूंगा, इनकी बहुत ज़्यादा मांग और इज्जत भी है, पैसा भी है. Can modern technology take place of books? Modern technology can never take place of book. बुक का टेक्नोलॉजी जो है ना बुक की जगह नहीं ले सकती, ये इसका मतलब है. What was did what case did young man bring to the Hazrat Umar Farooq Razilullah anha? The young man brought to Hazrat Umar Farooq Razilullah anha the case of murder of their father. Why did the accuser forgive the villager? The accuser forgave the villager because they thought this act as divine. Why did the old man hurl a stone at the camel? ये भी बड़ा अहम सवाल है. The old man hurled a stone at the camel because it nipped a few leaves of the hanging branch of his tree. What kind of boy was Pip? Pip was a lonely orphan. What changed Pip's life? A kind deed changed Pip's life. What advice did the Holy Prophet give to Hazrat Ali Raziyallahu anha? The advice which Holy Prophet gave to Hazrat Ali is when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of other. It is then most likely that you will know the truth. What is the significance of New Year Eve dinners? Very important question. The New Year Eve's dinner is of great significance as it is a source of visiting relatives and it is also considered a source of getting prosperity and long life. What should your first aid kit consist of? ये भी बहुत अहम है. फर्स्ट एड किट में क्या होना चाहिए? फर्स्ट एड किट शुड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट एड बुक, बुक नहीं बॉक्स, बैंडेड्स, sticky plasters and elastic bandages, gauze, and adhesive tape, antiseptic wipes and cotton wool, safety pins and tweezers, scissors, latex gloves, calamine lotion है, and analgesic and clinical ठीक है, analgesic tablets and clinical thermometer. एनालॉजिकल बुक से जरा चेक कर लीजिएगा ये एलर्जेटिक है कौन सा वर्ड है, वैसे मेरे से यही लग रहा है मुझे. अच्छा नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इन क्राइसिस मैनेजमेंट? द फर्स्ट एड हेल्प टू सेव लाइव्स ऑफ पीपल, सो इन दिस रिस्पेक्ट it plays a very important role in crisis management. What has he gained from this his summer job experience?
This helped him financially and made him understand importance of independence and responsibility. What is one good thing about newspaper? You can read the news of your own choice at any time of the day. This is good thing about newspaper. ये क्वेश्चन नहीं करना था। अच्छा, 49 क्वेश्चन हमारे पास अब ये होगा। वैसा मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, एंड वाला उठा के 49 पे ले जाते हैं। इस तरह नंबरिंग हमारी डिस्टर्ब नहीं होगी। ये 49 हो गया जी। व्हाट आर सम डिस्टिंक्शंस ऑफ द राइटर? ही वाज, सॉरी ये तो 48 वाला था, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, इधर ले जाते हैं। व्हाट इज गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर, ये हो गया ना। उसके बाद 49 है, व्हाट आर सम distinctions distinction of the writer? He won Quadrasm batch in scouting. He won the quiz contest on the topic Who is Who. He won Academic Excellence Award in speech competition and essay writing competition. He won prizes for computer application, geography, and advanced algebra. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, Why did the accuser forgive the villager? बड़ा अहम सवाल है ये भी। The accuser forgive the villager as they were impressed by his honesty and faithfulness. Next is 51. Why did the prisoner support Pip? As Pip had fed the prisoner in his misery, या misery कह लेंगे, misery, he supported Pip. उसने कैदी ने मिजरी की हालत में, ये नहीं कि उसकी मदद की थी, गुरबर की हालत में कह रहे हैं, इसलिए ही सपोर्टेड पीप, उसने पीप का सपोर्ट किया। व्हाट शुड ही वी डू इफ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड? अगर हमारा काम मुश्किल हो तो हम क्या करें? इफ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड वी शुड नॉट बी डिस्करेज्ड। वी मस्ट सी दैट इफ अदर पीपल कैन डू इट वी कैन डू इट आल्सो, देन वी वुड डू इट सक्सेसफुली। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फ्रेज प्रॉफिटेबल लिवलीहुड। प्रॉफिटेबल लिवलीहुड का क्या मतलब है? इट मीन्स अ पेइंग प्रोफेशन। इसका मतलब है कि ऐसा पेशा जो पैसे हमें देता है, पेइंग प्रोफेशन, प्रॉफिटेबल, जहाँ से प्रॉफिट हासिल हो जी। 54 क्वेश्चन हो गए, हाँ इतने ही है हमारे पास। तो ये जी बच्चों इंग्लिश के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है और मुझे सूची तौर पे अपनी दुआ में याद रखना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ओके जी, अल्लाह।